तो चलिए देखते हैं अप्रैल के फर्स्ट वीक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स न्यूज़। स्टार्ट करते हैं नेशनल न्यूज़ के सेक्शन से। हमारी सबसे पहली न्यूज़ है दैट रिसेंटली ड्यू टू सम पॉलिटिकल टेंशंस कच्चातीवू आइलैंड वाज इन न्यूज़। सो कच्चातीवू आइलैंड इज अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी लोकेटेड बिटवीन द इंडिया एंड श्रीलंका and it is currently administered by both the countries through a legal agreement signed in the year 1974 during the prime ministership of Indira Gandhi ji. And here the question for you is that which state separates India and Sri Lanka? हमारी अगली न्यूज़ है RBI से which is considering of developing a new agency to fight against the cyber crime और इसका नाम होगा Digita which stands for Digital India Trust Agency. हमारी अगली न्यूज़ है that Aira, country's first artificial intelligence based film has been recently launched. हमारी अगली न्यूज़ है साउथ इंडिया के जो एक्टर हैं अल्लू अर्जुन। He has become the first actor from South India to have his statue at the मैडम तुसाद म्यूजियम और ये स्टैचू होगा मैडम तुसाद की जो दुबई ब्रांच है वहाँ पे। Our next news is that NTPC, that is National Thermal Power Plant Corporation, has permanently closed down its 220 megawatt Barauni Thermal Power Station Stage 1 located in the बेगूसराय बिहार। हमारी अगली न्यूज़ है ओडिशा से जहाँ पे इंडिया का वन ऑफ द मेजर पोर्ट्स द पारादीप पोर्ट has emerged as India's largest major port in terms of cargo volume handling in the fiscal year 2024. Surpassing the Deen Dayal port of Gujarat, also known as the Kandla port. को मैंने आपको बताना है how many total number of major ports do India have? हमारी अगली न्यूज़ है जहाँ पे बाल्को दैट इज भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड विच इज़ अ यूनिट ऑफ वेदांता एल्यूमिनियम हैज़ रिसीव्ड द ASI परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड V3 certification for its aluminium products manufactured in Korba, Chhattisgarh. Here ASI stands for Aluminium Stewardship Initiative. Moving on towards the next news, and that is Bilkis Mir from Jammu and Kashmir is all set to become India's first woman to represent the country as a jury member in the Olympics. बढ़ते हैं अभी अपने स्टेट न्यूज़ के सेक्शन की ओर। हमारी पहली स्टेट न्यूज़ है फ्रॉम राजस्थान जहाँ पे वर्ल्ड का पहला ओम शेप्ड टेम्पल हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन द पाली डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। और नेक्स्ट न्यूज़ इज फ्रॉम द GI टैग्स। सांझी विच इज़ अ सेरेमोनियल क्राफ्ट फ्रॉम मथुरा हैज़ रिसीव्ड द GI टैग। वहीं दूसरी ओर त्रिपुरा के दो प्रोडक्ट्स नेमली मतबारी पेरा विच इज़ अ प्रसाद फ्रॉम त्रिपुरा सुंदरी टेम्पल एंड रिग्नाई पचरा विच इज़ अ हैंड वुवन क्लॉथ यूज बाय द इंडिजिनस कम्युनिटीज हैव गॉट द GI टैग्स। हमारा अगला GI टैग है फ्रॉम दी पीलीभीत उत्तर प्रदेश जहाँ के फ्लूट को GI टैग मिला है और यहीं से हमारे मेजर फ्लूट एक्सपोनेंट हरिप्रसाद चौरसिया जी भी बिलोंग करते हैं। एंड हमारा लास्ट GI टैग है फ्रॉम द बुंदेलखंड रीजन एंड दैट इज़ काठिया गेहूँ। बढ़ते हैं अपने अगले सेक्शन की ओर एंड दैट इज़ स्पोर्ट्स न्यूज़। हमारी पहली स्पोर्ट्स न्यूज़ है फ्रॉम टेनिस जहाँ पे इंडियन टेनिस स्टार रोहन बोपन्ना एंड इज Australian partner Matthew Ebden have won the Miami Open 2024 tennis men's doubles title. And by doing so, he has broke his own record by becoming the oldest man to win a Masters 1000 title on the ATP circuit at the age of 44. वहीं दूसरी ओर Novak Djokovic has broke Roger Federer's record as the oldest number one in the ATP rankings. On the other hand, the Italian tennis player Jannik Sinner, who also won the Australian Open, has become the world number 2 in the ATP rankings after winning the Miami Open. हमारी अगली न्यूज़ है हॉकी से जहाँ पे इंडियन नेशनल स्टार्स हार्दिक सिंह एंड सलीमा टेटे हैव been named as the Men's and Women's Player of the Year at the 6th Annual Hockey India Awards. The next news is from the chess, where the International Chess Federation rated Rapid Chess Tournament was hosted by IIT Madras. हमारी अगली न्यूज़ भी चेस से है जहाँ पे अर्जुन एरिगैसी हैज़ अचीव्ड द 9th रैंक in the world chess rankings and simultaneously has become India's top rated chess player. Our next news is from the weightlifting जहाँ पे weightlifting World Cup 2024 which is being organized in Phuket, Thailand. यहाँ पे India's weightlifter Bindya Rani Devi has won the bronze medal. Whereas on the other hand, the India's billiards player who was recently inducted into the Billiards Hall of Fame, Pankaj Advani, has won the CCI Billiards Classic Championship organized in the Mumbai for the 4th consecutive time. Moving on towards the new section and that is defense news का section.
तो हमारी पहली डिफेंस न्यूज़ है दैट इंडियन एयरफोर्स हैज स्टार्टेड अ 10-day एक्सरसाइज टू टेस्ट इट्स कैपेबिलिटीज़ एंड प्रिपेयर्डनेस फॉर हाई इंटेंसिटी ऑपरेशंस, एंड इस एक्सरसाइज का नाम है गगन शक्ति। ये एक्सरसाइज पिछली बार इन द ईयर 2018 हुई थी, एंड दिस एक्सरसाइज विल बी कंडक्टेड एट वेरियस लोकेशंस अक्रॉस द कंट्री। हमारी अगली न्यूज़ है दैट द आर्म्ड फोर्सेस are planning to establish Mumbai as the nation's first tri-services common defense station for the Indian Army, Navy and Indian Air Force। बढ़ते हैं अपने अगली न्यूज़ की तरफ, जहाँ पे स्ट्रैटेजिक फोर्सेस कमांड ने DRDO के साथ मिलकर कंडक्ट किया है द सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट ऑफ न्यू जनरेशन न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल नेम्ड एज अग्नि प्राइम फ्रॉम द डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड ऑफ द कोस्ट ऑफ ओडिशा। This Agni Prime missile is lighter than all the earlier Agni series of missiles and has a range of 1000 to 2000 kilometers and has a capacity of carrying the payload of roughly 1000 kgs. Last month we saw that DRDO conducted the successful flight test of Agni 5 missile with the MIRV technology. Moving on towards the next news, and that is Indian Army has begun the induction of Akash Tir system to sharpen its air defense posture. This Akash Tir system will enable the army to monitor the low-level airspace over the battle areas and to effectively control the ground-based air defense weapon systems. And the deployment of Akash Tir has begun with the first batch of control centers from Bharat Electronics Limited, Ghaziabad। बढ़ते हैं अपने अगले सेक्शन की ओर, एंड दैट इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी। माइक्रोसॉफ्ट एंड ओपन AI have collaborated on a $100 billion supercomputer project named as Stargate, whereas WHO, on the other hand, World Health Organization, has launched CoviNet, which is a global laboratory to monitor the emerging coronaviruses। हमारी अगली न्यूज़ है जहाँ पे a team of international scientists, including from India, have found the evidences of ozone on one of the Jupiter's Galilean moons, Io, Europa, Ganymede and Callisto, जो कि जुपिटर के 4 मून्स या फिर सैटेलाइट्स हैं। इनको हम गैलीलियन मून्स के नाम से जानते हैं बिकॉज गैलीलियो गैलीलाई डिस्कवर्ड देम थ्रू हिज टेलीस्कोप। तो इसके कैलिस्टो मून पे अभी ओजोन के एविडेंसेस मिले हैं। बढ़ते हैं अपने अगले सेक्शन की ओर, एंड दैट इज अपॉइंटमेंट। आवर फर्स्ट अपॉइंटमेंट इज as the DG of BPRD, that is Bureau of Police Research and Development, जिसके नए डायरेक्टर जनरल बने हैं IPS राजीव कुमार शर्मा। वहीं दूसरी तरफ ASSOCHAM, also known as Associated Chambers of Commerce and Industry of India, which was established in the year 1920, इसके नए प्रेसिडेंट बने हैं संजय नायर। Thank you, and please do share your feedback in the comments.